कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो दैट विल बी वेरी फाइन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरा वर्कशॉप आपको कैसा लगा, आप मुझे बताएं ताकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए यूज कर सकूं, और इसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या आपको ओवरऑल वर्कशॉप कैसा लगा वो आप मुझे बता सकते हैं। No, it was actually very good, and there were a lot of things to learn. The only thing that is in my mind is there were a lot more things to learn, and probably the time was short. हाँ, Uh, तो उसको बड़ा करेंगे। uh, हाँ, ये मेरे पास बार बार फीडबैक आ रहे हैं, मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि मैं इस चीज को थोड़ा और बढ़ाऊं ताकि आने वाले टाइम में टाइम सीरीज जो आप कई बार मुझसे बात कर रहे थे इनडायरेक्ट वे से, तो मैं टाइम सीरीज डेटा मैं फ्यूचर में डालूंगा इसमें, और कोर्स को भी थोड़ा बड़ा करूंगा, वो मेरा है दिमाग में, वो मैं करूंगा इसमें जी। और इसमें अदरवाइज आपको मतलब then what happens is, let's say like you were feeling that probably the money is higher, although there is no such case. Maybe some people might be feeling because the number of days are less, so that could be the reason. I don't know why you have this feedback that fee is higher. Probably researchers are generally at a level they don't understand the commands. They also don't understand the meaning of those commands, like at a statistical level, at a economic level. So maybe those kinds of inputs are also the student is expecting. Like this two, Neha and Vishal were there, so they were at the like beginning of their career kind of. So at the beginning of the career, many things they don't know. I know many people who are just wondering how should they initiate the idea of research, what they should look for, which article to read, and then statistically also they don't know much. So like I have also picked up now these things with the repetitive sitting with many faculties who understand these things, with my supervisor many a times, with other faculties who are there in different universities. Because one reason is that I'm starting late, so there were many things which were obsolete in my case. I did my post graduation way back in 1980-82. It's like 40 years have passed. Though I'm teaching a subject, but when you comes to research, everything becomes different, and so many things have to be refreshed. So that's how it was very valuable, whatever I got in these 4 days. Thank you, sir. So I will make a group also. This I will not dilute this group, and there's one more WhatsApp group which is for there. I will send you my links where you can update me or your feedbacks also, and you can join me in my future courses. And it is really enjoyable here. So अगर आपको be in touch, so कुछ भी challenges हो research के बारे में, we will handle it. So आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मेरे पास अभी जो है फिलहाल मेरे पास ऑपरेशंस है और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ मैं मंगलमय में। वैसे मैं मंगलमय में बीकॉम, बीबीए और एमबीए सभी सेक्शंस को मैं क्लासेस लेता हूँ। हमारे पास जो है जो बीकॉम है और बीबीए वो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी से है, और जो हमारा एमबीए है हमारा एटीपी लखनऊ से। मतलब आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं? हूँ तो मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, बट क्योंकि मुझे आपने कहा ना आपकी जो पीएचडी है वो तो मार्केटिंग एरिया में है। हाँ, मार्केटिंग एरिया में, बट वो सब्जेक्ट मुझे टेक्निकल थोड़े ज्यादा मिले हुए हैं, तो मैं फिलहाल वो पढ़ा रहा हूँ। बट मैंने पारुल में वही पढ़ा है, मार्केटिंग भी पढ़ा है मैंने। हैं? इससे अच्छा, पहले मैं पारुल यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने वहाँ पे मार्केटिंग भी पढ़ा है। अच्छा, ओके ओके ओके। और आपके सुपरवाइजर का नाम भी मैं कल आपसे पूछ रहा था, वो बात कहीं बीच में कट गई। आपके अहमदाबाद से आपने पीएचडी की ना? मैंने पीएचडी की जीएलएस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, जीएलएस यूनिवर्सिटी से की है। जीएलएस गुजरात, यूनिवर्सिटी, गुजरात लॉ सोसाइटी जो ये है, ये दैट इज इन अहमदाबाद। ये 1950 ये 2015 में यूनिवर्सिटी बनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये जो है गुजरात लॉ सोसाइटी, हाँ, जीएलएस यूनिवर्सिटी। और जो इसके जो इसको संस्थापक है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कुछ स्कूल्स बनाए थे 1927 में, और वो धीरे धीरे करके काफी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में एक यूनिवर्सिटी बनाया, और मैंने 15 में पीएचडी ज्वाइन किया। हुआ ये कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी है और जो आईएम अहमदाबाद के चेयरमैन है पंकज लाल, वो एक सेम है। और प्लस आईएम अहमदाबाद में एक फैसिलिटी दी थी जब हम पढ़ते थे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के लोगों को अपनी फैसिलिटी में यूज करने देते थे।
अच्छा, डेटाबेस वगैरह है जैसे डेटाबेस वगैरह, हाँ सर, जैसे लाइब्रेरी है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों हमारी लाइब्रेरी में मैं फर्स्ट था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को वो 4 साल जो मेरे पीएचडी के थे वो मैंने IIM अहमदाबाद में बिताए हैं पढ़ने के टाइम, तो मुझे वो मिल अच्छा गया टाइम। अच्छा, ओके ओके तो मैंने ओके। जॉब छोड़ दी थी, फिर मैं यही काम कर रहा था, देन आई वर्क मतलब देयर। virtually it was IIM Ahmedabad, but degree is from a different university You can because say you were so. also I am you were grateful also to from the Ahmedabad. time were sitting in that university, IIM Yes, sir. Ahmedabad. I am grateful to Ahmedabad professors. They have accommodated me for the 4 years. कई बार होता था वो बोलते थे कौन है, but they said कि करने दो काम. So I did my research there. मेरी publication सब वहीं से हुई थी. So that's how I done, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। लेट्स कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। Yes, sir. थैंक आपको आगे यू। कोई दिक्कत हो मुझे बताओ. I will handle it, यस sir. यस यस, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. गुड।